Hello guys, a very good morning to all of you. Welcome to Textbook Banking YouTube channel. Good morning. तो आरआरबी की रिजल्ट की बात करते हैं, इंटरव्यू की बात करते हैं और जो अपडेट है गाइस, काफी लोगों ने आप लोगों को बताया भी है और इस पे काफी बात हो भी चुकी है ऑलरेडी. दैट रिजल्ट विल बी आउट वेरी वेरी सून बाय थर्सडे, बाय फ्राइडे. But you have to understand that November you will have your interviews. November interviews are scheduled for RRB PO. So of course it will not be delayed further. If we see today, it is already we have crossed mid-October, right? So in the next few you can say days, mostly by Tuesday you can get the results. 18th, it is already 18th of October today, so mostly by Tuesday you'll get the results. So do not worry, because it will not be more delayed. मुझे लगता है ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है ये, ठीक है. बाकी नमन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. अगर हम बात करते हैं आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन की, यू शुड हैव स्टार्टेड बाय नाउ. मैंने आप लोगों को बोला भी था, ग्रुप में बताया भी था. सो डिवाइड योर सेट्स लाइक दीज: HR क्वेश्चंस, देन यू हैव करंट अफेयर्स, बैंकिंग नॉलेज क्वेश्चंस, then you have RRB specific questions, and then you have situational questions. So in this video, just I'm going to talk about how you have to be prepared with just the basics first, okay, and what are the different categories and what questions they can ask you in each of these categories. ये important है आपको समझना. तो अगर हम इंटरव्यू की बात भी करते हैं, तो ये कैटेगरीज हैं जिससे आपके क्वेश्चंस आएंगे. यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज ऑल. Basic HR questions which everybody asks, like regarding you, to judge your personality, about you, okay. Here we have banking specific questions, current affairs, banking, RRB specific questions, and certain situational questions, right? So if I talk about HR questions, I'll give you the list also, because this is something you have to prepare in advance. In fact, write it down, I will suggest. This is a major thing, major flaw where students go wrong. You have to write the answers for HR questions. Why? For clarity. You might get stuck. It is about you, but still you might get stuck with the answers. तो ये आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है. नाउ इन HR क्वेश्चंस सबसे पहला जो होता है बेसिक, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो ये आपका फर्स्ट HR क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है. इसके अराउंड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. स्वॉट एनालिसिस, डू योर स्वॉट एनालिसिस. सो यू शुड नो व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस. काफी लोग यही नहीं समझ पाते हैं लॉजिक इस क्वेश्चन के आंसर का. देन हॉबीज रिलेटेड क्वेश्चन. इफ यू हैव any gap year, why, there will be a reason and you will have to explain that gap year. उसके बाद आपका experienced candidates हैं अगर, तो job profile related, past experience related, they will ask you questions, ठीक है. past experience, strengths, weakness, I have covered here separately. Also they can ask strengths and weaknesses. So when we do SWOT analysis, strengths and weaknesses are covered here, okay. So separately also they can ask achievements, okay. Now there are a lot of cross questions that can be asked from this set only. तो ये एकदम शुरुआत है, एकदम बेसिक में जो हमें क्वेश्चंस कवर करने हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है. अब आपका पर्टिकुलर स्टेट, व्हेन यू टॉक अबाउट आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट, सो रिगार्डिंग योर पर्टिकुलर स्टेट, okay, you should have information, knowledge, okay. So here cross questions can be asked based on these HR questions. इसका भी मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगी. छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये आंसर करना है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू आंसर दिस, ठीक है. बाकी आपको व्हाई बैंकिंग सेक्टर, हाउ विल यू सर्वाइव इन रूरल एरिया, ये कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं. तो व्हाई बैंकिंग, so if you are posted in rural area, how will you survive? Rural posting, how will you manage a rural posting, rural areas, how will you survive? These are very generic questions, guys, but you have to think about this. How will you answer these, okay. And
where do you see yourself in the next 5 years? So you can say future context. Okay, what is the role of, what will be your role as a PO? So all these basic questions. Role as PO, where do you see yourself in next 3 years, 5 years down the line? These are the kind of questions you will get, which are specific to HR. Okay, basic HR questions. So this I want you to write down, get it checked. If you have gap year issue, please tell me. I will help you with this question. Gap year, how to, if it is more than 2 years, 3 years gap year, then please write to me in the comments so that I can help you with the answers. On my Telegram also, if you will message me, I will help you with the answers. Okay. No, Hari, you don't have to answer this. If they ask you, have you taken any coaching to crack the exam? If these are the kind of questions they ask you, so you can talk about, yeah, I have taken some guidance from few of the mentors, but not a proper, it was a mix of self-study and certain guidance. You can just say that. So honestly means, firstly, remember, this is a golden rule. In interviews, never be never give detailed explanations. Never give detailed explanations. Always brief to the point. Be safe by giving brief answers. By Because it should be to the point answers. Don't give big explanations for your answers. Particularly HR questions. Don't give big explanations, lengthy explanations. To the point, Hari, you will say that yes, I have taken certain guidance because mocks, particularly mocks, if I say, are very important. So you can mention that name, and you can say that rest was my self-study also and my disciplined routine which helped me. This much you say. It is okay, because they also know everybody will do mocks, everybody do take, and that is a requirement also. It's nothing to hide there. Okay. But guys, please write these questions. I will bring videos on SWOT analysis, how to answer hobby question. From hobbies also, you have to answer genuinely. Be honest, be genuine. They want to see your personality as a person who is humble, down to earth, appropriate, you can say, for a bank job. Now I will give you one example. For hobbies, if you say gardening, there might be cross questions. What are a few good indoor plants? Okay, so how will you maintain these indoor plants? Give the names of a few good indoor plants. How do these help? Right? ये छोटे छोटे questions. Reading is my hobby. Which is your favorite book? Okay, what is the summary of that book? Who is your favorite writer? Why is he your favorite writer? So I can ask you a lot of questions on hobbies. Don't invent a new hobby just one day before or 1 week before your interview. तो नई हॉबी नहीं लेके आ जाना है कि है ही नहीं, अभी नई हॉबी एकदम बना ली, ऐसा नहीं. तो जो भी आपकी हॉबी है, सोचो उसके बारे में जो आपको पसंद है. कहीं it can be as simple as just spending time with my family. There was one interview round in which one student was very honest. Okay, everybody was giving the same answers in sequence in that particular interview. There was one person who came, and one candidate who gave a very genuine answer that, sir, as such, I don't have a hobby. I just like to spend time with my family, free time with my family, talk to them. So they really liked that genuineness. They really liked that answer. So don't give fixed answers. बिल्कुल fixed answers ऐसे मत दीजिएगा कि ये पसंद है करना, और जो आपके रेगुलर आंसर्स, कॉमन आंसर्स होते हैं, वो नहीं देना है. ओके. 3 साल का गैप है भूमिकर आपको. 3 साल के बाद जॉब स्टार्ट किया है. जॉब अभी आप अगर कर रहे थे, हाँ, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा भूमिकर. बट मैसेज मी ऑन टेलीग्राम नो वंस, बिकॉज आई विल हेल्प यू विद योर आंसर. एक बार मैं आपको आंसर के लिए हेल्प करूंगी. आई जस्ट शेयर द लिंक विद यू. यू मैसेज मी देयर, बिकॉज देन आई विल हेल्प यू विद द आंसर. ठीक है, मैं आपको हेल्प कर दूंगी. हाउ टू गिव दिस आंसर फॉर गैप ईयर. हाँ, ठीक है. हाँ, मेरे को एक बार भूमिका यहाँ पे आप एक बार ग्रुप में टेलीग्राम पे मैसेज कर दो. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू. हाउ विल यू सर्वाइव इन रूरल एरिया, रूरल पोस्टिंग? हाउ विल यू सर्वाइव? Don't give answer like I will do this, I will do that, futuristic, I will change, I will adjust like that. Okay, I will start cooking on my own. No, I will not be the answer. I have an experience. You have to give example how you are already capable.
आप ये करेंगे कुछ नया वो नहीं बताना है, ये बोलना है कि मैं आई हैव दिस एबिलिटी, मुझ में ये पहले से ही एबिलिटी है, मुझ में ये पहले से ही रूरल एरिया में सर्वाइव करने का मुझे एक एक्सपीरियंस रहा है, हॉस्टल लाइफ के टाइम आई हैव सर्वाइव्ड अलोन इंडिपेंडेंटली, तो वो मैं यूज करूंगा यहाँ पे भी. इट इज नॉट माई फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम, I have done this earlier during my college time, graduation, post-graduation. Give past reference example. Okay. Don't give them promises. Okay. Don't give them promises. I will do this, I will do that. Give past examples, past reference examples. That is important here. Okay. For this question, how will you survive in rural area? I have a habit. I have lived independently during my college days. So I know how to survive and you can say take care of myself. Okay, so yeah, this is a very common question they ask. Okay, where do you see yourself in next 3 years? Don't give designation. Some people will see that I see myself as a manager, as a head. No, you should say that I see myself as a more learned person, more experienced person in this banking field, more learned person in this banking field with good awareness about this industry and various you can say and work profile, good understanding of the work profile. तो ये सारी चीजें आपको बोलनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा आपको polished answers देने. Anyways, I will help you with all these answers, so do not worry. I will help you with all the HR answers. Now, what are banking questions? What you get generally? For example, I will give you. You have to prepare what you did for current affairs also. Now, I'll give you one simple example how you will get questions. See, banking related questions definitely will be there. Without this, nothing. What you prepared for mains, you have to prepare in theory part, logical part also of banking questions. For example, priority sector lending. Okay. Now, there can be many questions on PSL. What are the questions on PSL you can get? What is it? Okay. What are the advantages of it? Okay. What are the disadvantages of it? So, there can be many questions like this. Advantages, disadvantages, what is PSL. तो थोड़ा सा डिटेल में you need to study these topics. Now RRB specific, go through this very nicely. RRB specific questions, what is the business, how to increase business in RRBs, yeah, specific questions, go through the different, you can say, websites, check their products, you should know all of these. So work on this, check the products. Only thing, situational questions you have to discuss. In the group also, I've started discussing situational questions where you might get a little stuck. Situational questions कैसे होते हैं आपके कि suppose हाँ, if there is maybe a problem in the bank, okay, with regards to security, how will you manage? How will you manage a problem in the bank? If there is an angry customer yelling at you, how will you manage that customer? Okay, right? So all these small things what they regularly face, I will say talk to people who are already your friends, relatives in the banks. Phone, talk to them on call. Okay, invite them for tea, talk to them. So situational questions, how to handle these, you will know because they have experience, they have seen, they have worked in RRB, they know what all challenges they face daily. Okay, हाँ, तो राहुल कुछ ही दिनों में आ जाएगा, रिजल्ट ऑलरेडी पेंडिंग है और नवंबर से ऑलरेडी इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, तो आपका रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगा. ठीक है, जस्ट अ फ्यू मोर डेज टू गो, यू विल गेट इट. हम मान के चलते हैं कि ट्यूसडे तक मैक्स आपका आ जाएगा रिजल्ट, क्योंकि अब नवंबर में ही इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, तो ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, बट मैं ये बोलूंगी कि वेट मत भी करो, क्योंकि इंटरव्यू अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि होगा आपका, तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करने की होती है. इंटरव्यू इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन, वो आप उस पर वर्क करो. वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज, फॉर सिचुएशनल क्वेश्चंस, speak to your friends, speak to your relatives who are already there in RRB working, because they will tell you that what they face on a regular basis, challenges they face on a regular basis. No teacher can tell you this कि वो आपके challenges क्या face करते हैं, ब्रांच के प्रॉपर क्या challenges आते हैं, प्रैक्टिकल challenges, उसके ऊपर बनते हैं आपके situational questions. ओके, तो उस पर आप काम करो. बाकी मैं ये आपको बोलूंगी कि HR क्वेश्चंस पे मैं और वीडियोस दूंगी, साथ में आपको GA रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम और प्रोवाइड करेंगे, पुष्पक सर भी रहेंगे तभी. और मैं आपको ये भी बोलूंगी कि मॉक इंटरव्यूज ज्यादा से ज्यादा, और इन फ्रंट ऑफ मिरर यू हैव टू प्रैक्टिस. इन फ्रंट ऑफ मिरर, this is a method or technique which you must follow. In front of the mirror, this mirror technique is, in front of the mirror you ask yourself the question, record your answers and then listen. ठीक है, अपने आंसर्स रिकॉर्ड करें और सुने. अगर आपको पैनल मेंबर पूछ रहे हैं आपके बारे में एंड यू आर गिविंग एन आंसर, तो आपके जेस्चर्स क्या है, बॉडी लैंग्वेज रियली हेल्प्स,
बॉडी लैंग्वेज आपको देखना पड़ेगा, वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो कहीं बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा नर्वस तो नहीं हो रहे हैं, आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ और नो। एक और क्वेश्चन बार बार हो रहा था, मुझे आ रहा था लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, इट इज नॉट कि आपका इंग्लिश में हिंदी, इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना या हिंदी में, एनी लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल इन, इंग्लिश और हिंदी, यू कैन गिव द इंटरव्यू इन दैट लैंग्वेज, राइट। तो ये कुछ बेसिक्स हैं गाइज विच यू शुड नो, and result will be out very soon definitely. Work on these, rest I will help you with the questions, you can share the questions with me and I will help you, I will give you feedback on that, answers, whatever answers you write for HR, I will share the feedback and I'll help you with it, so do not worry about that, but work on it because it will take time. ये सारे आपको confidence तभी आएगा जब आप मिरर के आगे एक बार बोलेंगे अपने अपने आंसर्स, मॉक्स देंगे. दिस विल कम थ्रू प्रैक्टिस बिकॉज यू विल गेट टू नर्वस. इतने लास्ट स्टेज पे आके आई डोंट वांट यू टू लूज इन द इंटरव्यू, आई डोंट वांट यू टू गेट नर्वस. सो इतने लास्ट स्टेज पे आप नर्वस ना हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी. दिस इज ऑल्सो अ गेम ऑफ प्रैक्टिस. People who will practice regularly will build more confidence, will be more confident during interview. Otherwise अगर आप मॉक्स नहीं देंगे, सीरियसली नहीं जाएंगे कि ठीक है इंटरव्यू ही तो है, तो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज करेंगे. सो यू हैव टू सीरियसली प्रिपेयर हाउ यू डिड फॉर प्री एंड मेंस. यू हैव टू प्रिपेयर सीरियसली फॉर दिस ऑल्सो. अब राहुल आज एक्सपेक्टेड है कि नहीं, बट मैं ये आपको बोलूंगी ट्यूसडे मैक्स है, मतलब तब तक तो आ ही जाना चाहिए. काफी लोगों ने तो बोला था अभी तक आ चुका होगा, बट ऐसा हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा डिले चल रहा है राहुल. बट वेरी सून, इन फ्यू डेज आई वुड से यू विल गेट इट. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. मुझे पता है कि ये होता है कि एंजाइटी है कि अभी रिजल्ट एंजाइटी की होगा नहीं होगा, देन वी विल थिंक अबाउट इंटरव्यू. बट जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दी इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट. जैसे ही रिजल्ट आएगा आई विल गिव यू दी अपडेट, आई विल बी लाइव हियर एंड आई विल गाइड यू ऑन इट, राइट. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. अच्छा, एक और चीज, एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो. मैं आपको ये भी बता दूं, कमेंट्स में इंटरव्यू रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है कमेंट्स में मेंशन करें, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियोस लेके आने वाली हूं एंड आई विल हेल्प यू अकॉर्डिंगली. ठीक है, मेंशन इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग इंटरव्यू. थैंक यू.